तो आज हम ड्रॉ करने वाले हैं ये सोनू सूद का पोर्ट्रेट। ये मैंने निकाला है, वो आर्टिस्ट अंकित जसमातिया सर जो है उन्होंने एक आर्ट कंपटीशन अनाउंस किया है। मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैं उनके वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अभी मैंने ग्रिड से ड्रॉ किया। आज मेरा मन किया है ग्रिड से ड्रॉ करने का, तो मैंने ग्रिड से ड्रॉ कर लिया है और मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं इसे एक इंटरेस्टिंग टेक्निक से ड्रॉ करने वाला हूँ। मैं इसे शेडिंग नहीं करूँगा, मैं इसमें सिर्फ एक वर्ड से शेडिंग करूँगा। मैं यूज़ करूँगा सोनू वर्ड, जो इन्हीं का नेम है। मैं उसी से पूरी ड्राइंग को बनाऊँगा। ये एक एक्सपेरिमेंट है, तो देखते होता है क्या नहीं। चलिए ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। करने से पहले ग्रिड को मिटा लेते हैं। गाइस, तो मैं जो ग्रिड है वो इरेज कर रहा हूँ मैकेनो इरेजर से। काफ़ी इजी हो जाता है इससे इरेज करना, क्योंकि ये एकदम मैकेनिकल पेंसिल की तरह वर्क करता है। काफ़ी इजीली इरेज होता है इससे। एंजॉय द वीडियो। मैं सोनू वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ और ओवरलैपिंग टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी इजी है इसे करना। बस स्मॉल लिखते जाना है और फिर उसके ऊपर आजू बाजू से कहीं से भी लिखना है वगैरह वगैरह। और लाइट करना है तो आपको थोड़ा दूर दूर लिखना पड़ेगा, और डार्क करना है तो थोड़ा पास पास में लिखना पड़ेगा। यही है, पूरे वीडियो में यही है, ठीक है। एंजॉय द वीडियो।
लेयर्स में कुछ ऐसा है फ्रेंड्स कि उसमें पहले मैं 4B से कर रहा हूँ, देन फिर 6B से, एंड एट द लास्ट 8B से कर रहा हूँ। एंड फिर अभी हाइलाइट्स के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ मैंने वीडियो में बताया हुआ है। सो एन्जॉय द वीडियो। अभी मैं ग्लास मार्किंग पेंसिल का यूज़ करूँगा। ये आपको सिर्फ 6 रुपीज़ में मिल जाएगी मार्केट में। सो अब मैं रेफरेंस को देखता हूँ और हाइलाइट्स दे देता हूँ। तो ग्लास मार्किंग पेंसिल से हाइलाइट्स देने के बाद फिर मैंने ब्लेंडिंग की और फिर मैं अभी रेफरेंस को अच्छे से देख के मैकेनो इरेजर से जहाँ पे एकदम एक्सट्रीम वाइट है वहाँ पे मैं हाइलाइट्स दे दूँगा। काफ़ी इजी है इसे करना। सो देखिए वीडियो में। सो अभी मैं क्लोथ शेड कर रहा हूँ और क्लोथ्स के ऊपर पहले से एक चैनल पे वीडियो है कि हाउ टू शेड रियलिस्टिक क्लोथ्स, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो देखिए वीडियो। Until I walk awake, scream my mind, I shout.
superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? तो गाइस, तो अभी मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। सो आई होप कि आपको इस ड्राइंग में मज़ा आया होगा। सो मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मैंने इसमें ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज़ किए, तो मैं बता देता हूँ। ब्लैक मैट है फेबर कैसल की 2B 4B 6B 8B, कोर्स की क्लासिक HB है मेरे पास ये एक, तो मैंने ये यूज़ किया। इसमें मैंने हाइलाइट्स के लिए मैकेनो इरेजर का यूज़ किया, बहुत कम यूज़ किया है बट लेकिन फिर भी किया है। ईयर्स वगैरह पे, फोरहेड पे देने के लिए, क्या बोलते हैं, क्लोथ्स पे देने के लिए, ठीक है। सो ये भी एक है, ठीक है। सो इसके ऊपर भी एक वीडियो है चैनल पे, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो ये एक होममेड ब्लेंडिंग स्टम्प है, इसका भी यूज़ किया मैंने। सो कैसे बनाते इसको, इसका भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और ये एक नॉर्मल ब्रश है, 20 रुपीज़ का राउंड आपको मिल जाएगा कोई भी आर्ट मटेरियल की शॉप पे, ठीक है। और ये एक मैकेनिकल पेंसिल है, ये आपको 25 रुपीज़ की कहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। सो ये पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है, सो इसलिए मैंने काफ़ी डिटेलिंग वर्क भी इससे ही किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। बाय बाय।